effect of pressure on adsorption. So how pressure affects the rate of adsorption of adsorbate on the surface of adsorbent. Pressure two type effect होची on the rate of adsorption. Okay, that's called effect of pressure on adsorption. The effect of pressure on adsorption can be explained by considering the adsorption isotherm. Adsorption isotherm माने the variation of pressure with rate of adsorption at constant temperature. At constant temperature. Temperature constant रहिबो. Temperature constant रखिकी what is the effect of pressure on the rate of adsorption? हमें जो प्लॉट का पाइबा से प्लॉट का हम कहबा adsorption isotherm. So adsorption isotherm कहले आइसो माने समान थर्मल टेम्परेचर टेम्परेचर फिक्स्ड रहले हमें जो प्लॉट पाइबा बा जो कर्व पाइबा ताके हम कहबा आइसोथर्म. सो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज द प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस rate of adsorption at constant temperature. So plot will be this time. What will be x by n versus t. So x by n versus t. T suppose equal to 225 Kelvin. Temperature fix होइछि हमें केवल rate of adsorption versus temperature plot करिछे. x by m is the amount of adsorbate per 1 gram of adsorbate and x होउछि adsorbate mass of adsorbate m होउछि mass of adsorbate. ताले x by m का कहबा amount of adsorbate per 1 gram of adsorbate. x by m x होउछि mass of adsorbate m है mass of adsorbate. x by m होउछि amount of adsorbate per gram of the adsorbate, that is x by m. हम x by m versus t प्लॉट करिबा त हमें ए टाइप रो प्लॉट दे. So temperature T equal to 225 Kelvin and x by n versus T. So this is the effect of pressure on rate of adsorption. Effect of pressure on the amount of adsorbate per gram of the adsorbate. So if x is the mass of the adsorbate, then is the mass of the adsorbate. X by m is the mass of the adsorbate per gram of the adsorbate. P is the pressure. And pressure बढ़ेले x by m बढ़ी चला. This type of plot is obtained. ए टाइप of plot हम जे पाइबा ताका हम कहबा आइसोथर्म कहबा काहे टेम्परेचर फिक्स अछि. Temperature fix अछि समता कहबा isotherm. So this is the adsorption isotherm. Okay. Next we will discuss the different ranges of rate of adsorption with pressure. So the effect of pressure on rate of adsorption can be explained by French-Louis adsorption isotherm. French-Louis adsorption isotherm. French-Louis adsorption
isotherm. So it is called Findley adsorption isotherm because the scientist Findley discovered this isotherm and explained this isotherm by applying the relation x by m equal to k p to the power x by m k p to the power 1 by n. So this is the Findley adsorption isotherm. So x by m is the amount of the adsorbate or 1 gram of the adsorbate, k is the adsorption constant, p is the pressure, 1 by n is the number, n is any number. So this is the Findley adsorption isotherm equation. Okay. Findley adsorption isotherm equation. Next, we draw a plot between x by m versus p. X by m versus p. That isotherm or that plot have three regions. First, it increases rapidly. Then rate of increase is slower, then it remains constant. It remains constant. So it has three distinct regions. Up to this region, it steadily, rapidly increases. X by m rapidly increases with p. Then rate of increase is slower. Rate of increase is slower, then remains constant. So it has three distinct regions. This is one region. Then up to from this to this is another region, and from this to this is another region. So in this case, up to this x by m equal to x by m is proportional to p to the power 1, and in this region x by m is proportional to p to the power 0. This is p to the power 1, this is p to the power 0. So p to the power 1 means it is directly related. X by m is that with increasing p, x by m increases, steadily increases by a straight line. Then p to the power 0 means p to the power 0 means 1 x by m is independent of p. P to the power 0 means 1. X by m does not depend upon p. Does not x by m does not depend upon p. x by m p over depend करे. x by m p over depend करे directly proportional to p. x by m is proportional to p to the power 1. x by m is proportional to p to the power 0. So x by m is proportional to p to the power 1 and x by m is proportional to p to the power 0. So this is the line parallel to p axis, means with increasing p jete बढ़ाइले मध्य x by m constant रहउछि, x by m बढ़ु एटे किंतु p बढ़ाइले x by m बढ़ि जाउछि. ये रीजन भी बढ़ुछि किंतु लिनियरली इंक्रीज होउछि. इट p रो पावर 1, इट p रो पावर 0. दैट ए केस है x by m is proportional to p to the power 1 to 0. the power 1 पर बढ़ी गया तर 1 कमी 8 पावर का 0 है. ए रीजन रे p रो पावर का 1 रे 0 भीतर भारी पड़छ. p रो पावर 1 रे कमी 8 p रो पावर 0 है. p रो पावर का
1 ରୁ 0 ହେଇଗଲା ମାନେ हम ओरिजिनल इक्वेशन थिला x by n प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 by n ताले एई पर्यंत n ର भ्यालु 1 थिला एई पर्यंत n ର भ्यालु n थिला 1 थिला जा पर कि 1 by 1 इक्वल टू 1 देखो आओ इथु p टू द पावर 0 थिला माने कोन n ର भ्यालु कोन थिला एई के n ର भ्यालु थिला इनफाइनाइट माने 1 by infinity equal to 0 so a case रे p रो वैल्यू n रो वैल्यू 1 डिक्रीज करेगी n रो वैल्यू सडनली डिक्रीजेस so up to this p to the power 1 होची माने n रो वैल्यू 1 so 1 by n equal to 1 ए केस रे n रो वैल्यू ऑटोमेटिक बड़ी जाउछ n रो वैल्यू बड़ी जीवो 1 by n रो वैल्यू कमी जीवो n रो वैल्यू कमी 8 n रो वैल्यू इनफाइनाइट हे माने 1 by n रो वैल्यू 0 हे अच्छा n रो वैल्यू बड़ी जाउछ त 1 by n रो वैल्यू कमी हेछि अब 1 by n वैल्यू 0 स्टार्ट हेछि आ एटा 0 स्टार्ट हेछि माने जते हम प्रेशर बढ़ेला मध्य एटा बढ़ु नाही एटा कांस्टेंट रहउछ ताको कोन दी These are called Friendly adsorption isotherm. The constant temperature x by m ର variation pressure सहित केमिति रहउछि तीनटा डिस्ट्रिक्ट रीजन रहउछि ये गोटे अप टू दिस गोटे रीजन ये गोटे रीजन इछु गोटे तीनटा रीजन रहउछि तीनटा रीजन रे प्रेशर डिफरेंट इफेक्ट रहउछि ए रीजन रे x by m इज प्रोपोर्शनल टू p to the power 1 ए रीजन रे x by प्रोपोर्शनल टू p to the power 1 to 0 ए रीजन रे x by m is proportional to p to the power 0 so x by m proportional to p to the power 0 means x by m does not depend upon p x by m does not depend p to 0 means 1 तबने x by m does not depend upon p ऊपर डिपेंड करे नहीं एही केस रे x by m is proportional to p to the power 1 पावर 1 वैल्यू होची पावर 0 वैल्यू होची तो मझिर जनता पावर 1 रु 0 भितर रही ता माने n ର वैल्यू बड़ी जीवो इथे n कोन n वैल्यू 1 होची तो n ର वैल्यू बड़ी गला माने 1 by n वैल्यू कमी गला इथे 0 है दिस इज द Friendly adsorption isotherm okay then we will discuss about the logarithm plot of Friendly adsorption isotherm. We know x by m equal to a p to the power n taking the logarithm value ln x by m equal to ln a plus 1 by ln 1 by n ln p बस सिंपली करना है we know x by m equal k p to the power n taking ln x by m equal to ln k plus 1 by n ln p if you draw a plot between log x by m versus ln p this is equal to y this is equal to mx x is this so m is this c equal to this is y this is mx this is so if you draw a plot between ln x by m versus ln p we will get a slope equal to 1 by m
we'll get a slope equal to 1 by n. So ln x by n is y, ln p equal to x. If you draw a plot between ln x by n and ln p, we'll get a slope 1 by n and an intercept, that's a constant value, equal to ln k. So let us draw a plot between log x by n, ln x by n versus ln p. Okay. ln x by n, ln p. So just intercept will be this. So intercept is ln a, intercept is ln a, the log ln k, slope equal to 1 by n. So this is the format equal to y equal to fx cos c. This is the intercept, c equal to ln k, y equal to ln x by n, x equal to ln p, slope equal to 1 by n. So this is the equation of a straight line having intersect ln k. Two variables are there. One variable is ln x by n and other variable is ln p. So there are two variables. Next, we'll discuss about the application of adversary. Application of adversary. Application of adversary. So adversary has wide range of application. So we'll discuss one by one. So first application we discuss in gas mask. We are using gas mask to prohibit the entry of the outer side gaseous molecules to our nose. So in the gas mask, some adsorbent are there. Adsorbent is there in your gas mask. So outer side gaseous molecules which are adsorbent, they don't enter into our nose. They simply remain on the surface of the nose. That is on the adsorbent. Our gas mask contain adsorbent layer. When outer side gaseous molecules or adsorbent molecule, when they try to enter to our nose, on the surface of the nose, on the surface of the gas mask, adsorbent is there, which does not allow the outer adsorbent molecule to enter to our nose. हम gas mask रे surface रे adsorbent थाए, इतने बाहर का molecule adsorbent molecule माने try to enter our nose, से समय adsorbent molecule रे समय adsorb हो जाती, अब भीतर को पसी बांधे ना. So surface chemistry application रहुची gas mask. Second application रहुची room रे suppose moisture लागे चे, demoisture हम तक केमिकल करें, demoisturization केमिकल करें, मतलब अपन dehumidizer. Humidity gas रो room humidity केमिकल बाहर कर जाए. Humidity are gaseous molecule, adsorbent. इसलिए हमें adsorbent, humidity का हमें adsorbent अप्लाई करेगा. adsorbent रे adsorb है जीवो, आउ ताप तक नहीं बाहर ताकू अप्लाई करेगा. First तक हमें adsorb करेगा. Humidity को adsorbent देके हम तक adsorb करेगा. तापरे हम तक रिमूवल करी पारी. Number 3 point होची removal of coloring matter. Suppose removal of coloring matter.
removal of coloring matter. Suppose हम लिक्विड सॉल्यूशन रे कलरिंग मैटर रही है, तो लिक्विड सॉल्यूशन रे कलरिंग मैटर रही है, तो हम से कलरिंग मैटर को केमिति बाहर करिया, से कलरिंग मैटर को बाहर करिया में हेले हमें ताको किछि एडजॉर्बेंट ऐड करिया, एडजॉर्बेंट ऐड करिया, जो कलरिंग मैटर ला एडजॉर्बेंट, जैसे लिक्विड रे हमें एडजॉर्बेंट ऐड करिया, जैसे कलरिंग मटेरियल में एडजॉर्बेंट रही गला लागी गला एडजॉर्ब हो गला, हमें ताको फिल्टर कर देले कलरिंग मटेरियल से एडजॉर्बेंट, हमें ता एडजॉर्बेंट ऐड करिया, कलरिंग मटेरियल एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेंट लागी गला, ताले हमें ताको फिल्टर कर दबा बा ताको हमें अलगा कर। So remove in this way by applying the surface chemistry, basic principle of surface chemistry, by applying the basic principle of adsorption, we can remove coloring matter in the solution. Creating high vacuum, high room रे high vacuum में केमिति क्रिएट करें, vacuum केमिति क्रिएट करा जाए परिवार ना तो रूम भीतर हमें गैसेस मॉलिक्यूल को बाहर करती पारे, ताले रूम रो गैसेस मॉलिक्यूल हम बाहर केमिति बाहर कर दी पारिबा, गैसेस मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट का केमिति बाहर कर पारिबा, हम तो एडजॉर्बेंट ऐड कले एडजॉर्बेंट हे करला परे हम ताको बाहर लेकी अलगा कर दे। सो हाई वैक्यूम हम नेक्स्ट एप्लीकेशन होची क्रिएटिंग हाई वैक्यूम हम क्रिएट करि पारिबा। सो हाई वैक्यूम इन दिस वे वी कैन क्रिएट हाई वैक्यूम में क्रिएट करि पारिबा। नेक्स्ट होची क्लॉथ, डाइंग ऑफ क्लॉथ नंबर 5 एप्लीकेशन होची डाइंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का केमिति डाई करि पारि, तो डाइंग ऑफ क्लॉथ का केमिति डाई करि। सो applying the same principle, adsorption principle apply करेगी क्लॉथ का कलर नहीं पाएगा, that is called the basic principle of adsorption। क्लॉथ रे केमिति डाई रही पाए से adsorption principle apply करेगी हमें क्लॉथ को डाई कर दे पाए। So these are the basic application of adsorption, जोटा कि हम डे टू डे लाइफ में हम ताको यूज करी पाए। So next we will discuss another basic concept of adsorption, catalyst. So what is catalyst? Catalyst form. It is a chemical substance. Catalyst is a chemical substance which can alter, which can change the rate of a chemical reaction. The chemical reaction rate को change कर पाएगा catalyst. Catalyst is a chemical substance which can alter the rate of a chemical reaction without changing its composition and amount. And catalyst निजर composition amount को change न करेगी, गोटे केमिकल रिएक्शन ऐड हेगी से केमिकल रिएक्शन रेट से चेंज कर देबो, मासे केमिकल रिएक्शन रेट से बढ़े नहीं पारे नले केमिकल रिएक्शन रेट से कम भी पारे। So catalyst can either increase or increase or decrease the rate of a chemical reaction without changing itself, निज को चेंज न करिकी बा निजर कंपोजिशन को चेंज न करिकी जे कि गोटे केमिकल रिएक्शन रो रेट टाको बढ़ाई पारिबो आ कमे पारिबो हम त कहि परिबा कैटालिस्ट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट आर देयर।
positive catalyst, other is negative catalyst. गोटे होची positive catalyst आउट होची negative catalyst. Positive catalyst is a chemical substance which can only increase the rate of a chemical reaction. जे केवल chemical reaction को rate को increase करि पारे, chemical reaction रो rate को increase करि पारे मतलब positive catalyst कहबा. और negative catalyst के जे कोटे chemical reaction rate को decrease करि पारे, decrease the rate of chemical reaction. So catalyst दी प्रकार अछि, गोटे होछि positive catalyst आ गोटे होछि negative catalyst. Positive catalyst गोटे chemical reaction rate को increase कराए और negative catalyst गोटे chemical reaction rate को decrease कराए. Next we will discuss the properties of catalyst. Catalyst रो properties को हमें discuss करेंगे. Properties of catalyst. So, what are the various properties of catalyst? Number 1 point. A catalyst only can alter the change. It can initiate the reaction. ये रिएक्शन आरंभ करि परिबो नाही. ये केवल रिएक्शन रेट टाकू बढ़ाई परिबो बा कमे परिबो. It can only alter the rate. It can start a reaction. The reaction start करि परिबो नाही. Reaction start हो सारा परे ये केवल तार रेट टाकू आइदर बढ़ाई परिबो नले कमे. सेकंड पॉइंट होची a catalyst is taken in a very small amount. यदि रिएक्टेंट रो मास हेतिबो गोटे केजी त कैटलिस्ट रो मास गोटे ग्राम हेले भी चले. ए कैटलिस्ट इज टेकन in a very small amount. It is taken in a very small amount and itself remains unchanged. In chemical composition as well as amount. At the end of the reaction sari sarla pore tar amount ki change jeting amount leithe na recovery kari pariba ata chemical composition madhyo kichi change huye nahi. So first like it can initiate the reaction. It is taken in a very small amount jo amount ko hum last recover kari pariba ar chemical composition ki change huye nahi. Number 3 point is a small amount of catalyst can catalyze to a very large amount of reactant. बहुत गोटे reactant नहीं थिबा जदि ताकू टिके अल्प टिके catalyst दे देले मध्य से ताकू catalyze करि पारि. ता माने जे reactant अधिका होचे हम catalyst अधिका ता मान सेटा जत्ते अधिका reactant नेले मध्य catalyst बहुत कम amount रे नेले
से ताकू कैटालाइज कर पारिबो बा तार रेट टाकू बढ़ाई पारिबो बा तार रेट टाकू कमई पारिबो। नेक्स्ट पॉइंट होची ए कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। नंबर 4 पॉइंट, a catalyst is specific in nature. Specific in nature means गोटे पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन पाई बा गोटे पर्टिकुलर रिएक्टेंट पाई गोटे पर्टिकुलर कैटालिस्ट दरकार। सबु केमिकल रिएक्शन को गोटे प्रकार कैटालिस्ट कर पाइबो नाही। सो ए कैटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ए कैटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। So every chemical reaction has a particular type of catalyst. प्रत्येक chemical reaction पाई गोटे particular catalyst रही। गोटे प्रकार catalyst सब प्रकार chemical reaction catalyze कर परिबो नाही। नेक्स्ट पॉइंट होची ए catalyst केबे इक्विलिब्रियम को चेंज कर पारे नहीं। ए catalyst does not change the equilibrium state of a reaction. The catalyst does not change the equilibrium state of a reaction. Equilibrium or position के चेंज है। catalyst देले equilibrium जो पॉइंट आसीला equilibrium constant वैल्यू सेति आसी। equilibrium constant वैल्यू केबे चेंज हो नाही। काहे कि catalyst फॉरवर्ड रिएक्शन को जो रेट में कैटालाइज करे बैकवर्ड रिएक्शन मध्ये सही रेट में कैटालाइज करे। माने फॉरवर्ड रिएक्शन को जो रेट में कैटालाइज करे बैकवर्ड रिएक्शन मध्ये से सही रेट में कैटालाइज करी पारे। से कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गोटे कैटालिस्ट रो सरफेस एरिया जदि अधिक रहइबो तार तार कैटालिटिक पावर मध्ये बढ़ी। सो कैटालिटिक पावर ऑफ ए कैटालिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट। से भाई ए कैटालिस्ट ता जदि गोटे पीस कैटालिस्ट नबा तार कैटालिटिक पावर करू से पीस ऑफ कैटालिस्ट का हम पाउडर करके नबा से पाउडर फॉर्म रे कैटालिस्ट रो एक्टिविटी ता मोर रहइबो वन पीस ऑफ कैटालिस्ट। सपोज ये पीस ऑफ कैटालिस्ट आर सरफेस पर केमिकल रिएक्शन हो इटे जति के रेट ऑफ रिएक्शन पाइबा एटा का हम पाउडर फॉर्म करबा। अब जदि हम पाउडर फॉर्म में करके नबा सेठी तार रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत अधिक है। सो a catalyst is more active in powder form in comparison to solid form. solid state का ଗୋଟେ piece of state रे तार catalytic power जहा थिला मतलब ग्राइंड कर देकी पाउडर फॉर्म में जदि ले जिबा ताले सही समय रे कैटालिस्ट रो एक्टिवेटिंग पावर बा कैटालाइजिंग पावर सेटा अधिक रही। So example of positive and negative catalyst. So first, what is positive catalyst? Already I have told, which increases the rate of chemical reaction. What is negative catalyst? Which decreases the rate of chemical reaction. For example, positive catalyst example होची so sulfur dioxide gas
যদি অক্সিজেন তো গ্যাস মিশাইব তাহলে সলফর ট্রাইঅক্সাইড গ্যাস পাইব সলফর ট্রাইঅক্সাইড গ্যাস পাইব সলফর ট্রাইঅক্সাইড গ্যাস রে V2O5 होची catalyst vanadium pentoxide which increases the interaction between sulfur dioxide gas and oxygen gas. So vanadium pentoxide increases the rate of chemical reaction between sulfur dioxide gas and oxygen gas. So vanadium pentoxide by V2O5 is a positive catalyst. Vanadium pentoxide or V2O5 is a positive catalyst because it increases the interaction between, right, increases the rate of formation of SO3. It increases the rate of formation of SO3 gas. Okay. Then come to negative catalyst. The catalyst negative catalyst. The catalyst which decreases the rate of a chemical reaction. The catalyst the chemical reaction rate decrease kari parla tara हम ताकि negative catalyst कहते हैं. For example, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन में कले हमें पाइबा फॉस्फिन. क्लोरोफॉर्म मतलब जे हम ऑक्सीडेशन करबा तले फॉस्फिन पाइबा. এই ক্লোরোফর্ম को অক্সিডেশন কলে আমরা ফসফিন পাইবা তাতে আমি ইথাইল থেকে অ্যালকোহল নিয়ে যাবা তাহলে এই যে রেট অফ কনভার্সন ফ্রম ক্লোরোফর্ম টু ফসফিন এটা ডিক্রিজ করে যাবে ক্লোরোফর্ম টু ফসফিন এই যে রেট অফ কনভার্সনটা এটা ডিক্রিজ করে সো the it is so ethyl alcohol is called negative catalyst. So chloroform decreases the rate of conversion of ethyl alcohol decreases the rate of conversion of chloroform to phosphine. So ethyl alcohol is acting as a negative catalyst. Okay. Another example is there, the presence of glycerol or phosphoric acid. The presence of glycerol or phosphoric acid decreases the decomposition of hydrogen peroxide. The hydrogen peroxide डिकम्पोजिशन को डिक्रीज करि परिबो ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड ता माने ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड acts as a negative catalyst for decomposition of hydrogen peroxide. So these are the examples of positive and negative catalyst. These are the example of positive and negative catalyst. Next we will discuss catalytic poison and catalytic promoter. Poison